I stitched one shirt using a traditional women's fabric. तो इसको different occasions and festivals में पहन के गया था and people always wanted it. I didn't know it then, but years later, after two failed businesses and a drained bank account, that one shirt would spark my next big idea. तो जेब बेसोस का 70% रूल लेके हम निकल पड़ा. I joined a 1 month yarn dyeing class. तो वहाँ में जाके हम ये देखा कि I was the only guy with 30 other old women. तो at first मैं इतना nervous लगा, like I felt like an outsider. But slowly I got comfortable. I continued, learn everything about colors, textures, and the art of dyeing yarn with vegetables like onions, leaves, turmeric, herbs और ऐसा बहुत सारा vegetables का. तो later on I got so curious कि I went to a master weaver to learn everything about this handloom process. First they buy the yarn, then they take the yarn and put in this DIY hand spinning wheel. जहाँ on one side they mount the yarn and on one side they spin the wheel. The yarn gets roll over this cylindrical tool called bobbin. तो ऐसा bobbin को खड़ा करके they pull the yarn from one side to the opposite corner to create the base that runs along the length of the fabric. Then ये lengthwise yarn को loom में join करने के लिए carefully each and every yarn is passed manually through this comb-like horizontal frame called reeds. Once this is complete, the yarn is now wrapped onto a beam with the reeds acting as the divider in the middle. तो tension के लिए on one side ऐसा कुछ heavy सामान रख देता है वो लोग. तो slowly ऐसा brass मार के to clean off the darts, uneven yarn, they carefully start rolling the yarn onto the beam. So finally the completely wrapped yarn beam is carried and hang onto this big structure जहाँ में weaving start हो जाता है. Equal numbers of vertically aligned yarns are passed and pulled through each of the horizontal yarn. तो very important है क्योंकि इससे ही आपका जो flowers, motifs and design लोग ये सब बनाया जाता है. This is the closer view in details. And after few more adjustments, so finally the weaving process starts. लाइक बच्चा से अपना ट्रेडिशनल कपड़ा पहन के आया है लेकिन प्रोसेस आज ही मालूम हुआ कि इतना लंबा है. तो लाइक व्हाट इज़ लुई विटन, व्हाट इज़ गुच्ची, व्हाट इज़ प्रादा. तो ये है रियल क्राफ्टमैनशिप, पूरा मानना पड़ेगा. तो आईआईटी में मेरा कोर्स प्रोडक्ट डिज़ाइन था एंड आफ्टर दिस लर्निंग माय इंटरेस्ट गॉट सॉट अप टू ए होल न्यू लेवल. तो घर आके ही इन नेक्स्ट 2-3 डेज एक पूरा समर कलेक्शन डिज़ाइन कर दिया. टू डिसाइड द ब्रांड नेम आई वेंट फॉर द वर्ड YOKSA जो डिफाइन करता है द ट्रेडिशनल दाव, ए कॉमन वेपन ऑफ वार्स एंड सर्वाइवल carried by the ancestors of each and every community of Northeast India. So symbolizing warrior spirit of our forefathers and woven by the mothers and sisters of our community. But I needed a co-founder, especially from a fashion background. तो I knew one, तो एक sample बनाया, उसको दिखाया, लेकिन he was not impressed and backed out. Yes, to be honest, it looked like a bad shit. But I knew that कि ये प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल है. तो मेजरमेंट रेडी किया, फ्यू डिज़ाइंस वर मेड. तो इंस्टाग्राम में प्रमोशन भी स्टार्ट कर दिया है, व्हाट्सएप में भी. तो वीविंग करके धो के टेलर में जाके सिला के फाइनली प्रोडक्ट वाज रेडी एंड हियर वी गो. तो ये था आउटकम. सो कंफर्ट, सो लाइट, हैंडलूम री इमेजिन एज समथिंग डिफरेंट. तो ये वन ऑफ द फर्स्ट फोटोशूट किया, ए परफेक्ट समर कोट सेट्स. तो 2 more कोट सेट्स भी निकाला. देन एक से नया डिज़ाइन बना के वी स्टार्टेड सेलिंग. तो वी हैड ए गुड फीडबैक, फ्यू मोर डिज़ाइंस एंड ये एक शूट किया. सो दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली एनविजन बिफोर, हैंडलूम कैजुअल वेयर फॉर एवरीडे यूज. बट आई न्यू कि आई कैन कंटिन्यू लाइक दिस क्योंकि द प्रोसेस ऑफ हैंडलूम इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव. तो हम डिसाइड किया कि आई नीडेड अ जॉब फॉर माई पर्सनल एक्सपेंसेस. तो इंटरव्यू के लिए निकला, गॉट द पोस्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर. तो घर में इसी खुशी में लड़का सुधर गया बोल के पूजा रख दिया फॉर माई हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. सिंस आई बिलोंग टू अ ट्राइबल कम्युनिटी, आवर रिचुअल्स आर नॉर्मली डन लाइक दिस. ए पिग और फ्यू चिकन्स आर सेक्रीफाइस एंड देन होममेड अपोंग आर सर्व्ड. So finally my new job life शुरू. So every day after office I used to come back to the tailor, check the measurements and sizes, do the packaging and shipment before the courier service closed down. So more product shoots during the weekend. So this is one of the suits with animal motifs on it and this is another one with the base color, very simple, very minimalist. तो officially I launched YOKSA. तो घर का जो रेन ओनर था he came as again and few friends and family member came. तो once again I used Shopify for its clean easy UI. तो इस बार everyone's favorite color purple choose किया. तो फिर से गांव जाके made the designs keeping this silhouette in mind. So finally this was the outcome. For the first time I was really proud of something that I made. Like no one believed that handloom can be reinvented like this. The point ये था कि just forget about me being the model. It's about handloom that has been always limited to festivals and events.
So next design के लिए I took inspiration from the Arona design of the Baro community. So 200 के stitch करके this is the result of how you will look wearing the shirt. 1, 2, 3, 4. So the after office hustle continued. Back to room, measuring, sizing, shipment, scales. Back to office, again back to tailor, back to deliveries, new designs. Kabhi has to work inside without current, kabhi has to take the work outside late night. And slowly start हो गया zone of comfort. Late night evening, office से लौट के late night in traffic jam, exhausted. I used to find solace in the drinkings and parties, and again started solo. So this whole cycle of job by day, hustler by night continued for 1.5 years. I became way too comfortable. No company can be built in comfort like this. Handloom is not like a regular printing job कि यहाँ तुम print कर लिया, लगा दिया, उसके बाद तुम सिर्फ बेच दिया हो गया. यहाँ में precise measurement where every weave matters, every thread count matters. कि every inch of motifs, every inch of designs needs extra attention. तो पूरा कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए ये हैंडलूम पार्ट को. But above all, the women of these villages are waiting for my next phone call, the delivery of the next color of yarn. For them, it's a new source of income, a source of livelihood, a source of learning, a reason to smile, and a day to look forward to. अगर हैंडलूम से I need to make a successful brand, I knew कि it needs all of me. I might not have the best business plans, but I had guts. So I decided to quit. And as they say, comfort is the enemy of greatness.